Hello and welcome to Rajya Sabha TV. This is Rajya Sabha News with the host Rajat Kane. Time for a quick wrap of the headlines. Rajya Sabha begins general discussion on union budget ahead of Lok Sabha. Congress party's Kapil Sibal initiates discussion, questions government's disinvestment plans. BJP Sushil Modi says budget lived up to expectations in allocation, expenditure and reforms. Rajya Sabha passes Major Port Authorities Bill 2020. Shipping Minister Mansukh Lal Mandavia said bill to help the ports develop world-class infrastructure and ensure transparency in the functioning. Bill has already been passed by Lok Sabha. And lastly, members raise issues of public importance during Zero Hour and Question Hour. BJP MP Anil Baluni highlights need for a mechanism to study glaciers to prevent disasters like Uttarakhand tragedy. Well, news in details. Now, the Major Port Authorities Bill 2020 was passed by Upper House today with 84 votes in favour and 44 against it. The bill aims to provide for regulation, operation and planning of 12 major ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon Board of Major Ports Authorities. Replying to discussion, Shipping Minister Mansukh Mandavia said the bill will make ports or major ports in country more autonomous and help the ports develop world-class infrastructure and also enhance transparency in their functioning. हमने ये पोर्ट अथॉरिटी बिल में ये प्रावधान लेके आए हैं जैसे पोर्ट स्वायत्त बने, पोर्ट अपने डिसीजन स्वयं को ले सके। एक यहाँ कई माननीय सदस्यों ने बताया कि 10-10 किलोमीटर में पोर्ट बन गए हैं। एक प्राइवेट पोर्ट ने अपना टैरिफ कम कर दिया और मेरे मेजर पोर्ट है उसमें टैरिफ ज़्यादा है और उसको उसकी कंपैरिजन करनी या तो कम करना है तो उसको मेरे पास मंत्री तक आना पड़ता है। वो मिनिस्टर तक ना आए और स्वयं वहाँ डिसीजन ले ले और टैरिफ कम करके उसके साथ कंपटीशन करे और कंपटीशन करके वो टिक पाए। ये बिल में हमने प्रावधान किया है और आकाश उसमें कोई जगह पे टूट नहीं पड़ा है कि आप इसको फिर से ड्राफ्ट करने के लिए भेजिए। भले ही पहले लोकसभा भंग होने से कमेटी के पास गया हुआ कानून जो गया था उसकी सिफारिशें आपने नहीं मानी हो, आज उसको देख लीजिए, फिर से ड्राफ्ट ठीक कीजिए। फ्रंट डोर, बैक डोर, विंडो कहीं से भी प्राइवेट आदमी घुसे इसकी बहुत संभावना है, इसको बंद कीजिए। मैं मानता हूं एक मेजर पोर्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और आंध्र प्रदेश जैसा राज्य जो सही माने में आज विभाजन होने के बाद जो कठिन समय से गुजर रहा है उसके ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और पोर्ट के कारण वहाँ पे कारोबार भी बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम महत्व होगा। इसके लिए भी निजी क्षेत्र के लोगों ने भी जो उसमें योगदान दिया है उसको भी याद रखना चाहिए। Our Honorable Finance Minister has said in her budget speech, at page 13 of her budget speech, paragraph 64, major ports will be moving from managing their operational service on their own to a model where a private partner will manage it for them. Therefore, sir, the apprehension of the standing committee is writ large in the budget speech of the Honorable Finance Minister. Therefore, on behalf of All India Trinamool Congress, I strongly oppose this bill. New birth and monetization mechanism work is taken off in Paradip, 3,500 crores rupees. That was the plan and program that should be completed in December, but that was not completed till December. Further it's going on and going on. Without having any workers' representation in the authority, the workers will not get justice, sir, for implementation of minimum wages and ESI, PF, and all the that are already violating by the major port trusts, sir, in the country. This bill was introduced with the ideas of bringing in PPPs
which is again, from our point of view, on the core operational issues, it is going to be very supportive. क्या माननीय मंत्री जी स्टेट एक्सचेकर से पैसा लगा के डेवलप करके इनको तैयार कर रहे हैं कि कुछ नए ग्राहक मिले उनको बेच दिया जाए? मंशा तो यही है। लॉ इज नेवर अवे फ्रॉम कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यही कहता है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो यही है। सारी जन संपदा को धीरे धीरे बेचने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है। ये जो कमेटी बनाई जाएगी पोर्ट पर, उसमें एक एक रिप्रेजेंटेटिव उस स्टेट का होना है जहां ये मेजर पोर्ट हैं। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि वो ऐसे स्टेट्स जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनका एक्सेस पोर्ट पर नहीं है, उनको भी इस बोर्ड में उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। I would like to register my strong opposition to this bill. The proposed Major Port Authorities Bill 2020 is nothing but an attempt to convert the ports into corporate entities. It will make them an easy target of acquisition by corporates or multinational companies at throwaway prices, including its huge lands and other assets. Ironically, what I find in all establishment, Honorable Minister, sir, why do you not look at the possibility of representative of labor unions? However, it seems as per clause 2 and 3 section 22, clause 2 section 25 and section 26, it takes away the involvement of the state government in the creation of the master plan. Instead of developing private airports, the central government has to take it by giving the appropriate powers to the state government also, by considering the section 22, 23 and 25, and the educating board also to be given priority to the state government. By privatizing the ports, the employment opportunities of OBCs, SC/STs and even general employees will be grossly affected. This fear has already caused a discontent against the legislation among the employees of the ports. You ask the workers of the BMS, in the heart of hearts, they will feel annoyed by this bill. Sir, the workers, their blood, their sweat, that they are the ports. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है डिफाइंड है, उसको जो है यहाँ एग्जम्पशन पर डाला जाए और यहाँ के हाउस के मेंबर्स को मौका दिया जाए बोर्ड पे बनने के लिए. Well, Rajya Sabha also began general discussion on Union Budget 2021-22. The House has allotted 10 hours for discussion. Normally, discussion on general budget is taken up first in Lok Sabha, but discussion started in the upper house first, only the 6th time today. Earlier, discussion on budget commenced first in the upper house in the years 1955, 1959, 1963, 65 and the year 2002. Initiating discussion, Kapil Sibal of the Congress Party questioned government's disinvestment plans, while BJP Sushil Modi said this year's budget has lived up to expectations in allocations, expenditure and reforms. Corporate profits. NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, BJP 1.4%. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy. It only shows that in fact in every budget the twin objectives are growth and equity. Growth and equity. Some people prefer growth, others prefer growth plus equity. And I will demonstrate to you how in this budget you have only preferred growth. You have forgotten about the people of India. Government of India will be spending 100 lakh crore in the next financial year for the development of the infrastructure, and that will be the world-class infrastructure will be developing through this national infrastructure pipeline. और इसको funding कैसे करेंगे? How this 100 lakh crore will come? Through creating institutional mechanism, monetizing the asset. और इसलिए मैं सौती महोदय
जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए, और भारत सरकार ने FDI DFI बनाने का ऐलान किया है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स दे आर नॉट केपेबल to provide long-term lending to the infrastructure projects. So we require institutions like DFI or say Government of India has provided 20,000 crore to this DFI, और ये lending और इसका lending portfolio जो है ये 5 लाख करोड़ होगा अगले 3 साल के अंदर. Well, several important issues of public importance were made in the upper house during 0 hour on Wednesday. Members A. Mohammed Khan demanded the Hajj pilgrim from Tamil Nadu be allowed to board from Chennai instead of Cochin Airport. Member K. Van Lavina raised the issue of closure of Indo-Myanmar border trade at Zukhawthar village in Mizoram, and member Anil Baluni highlighted need for a mechanism to study glacier and to manage and prevent disasters such as recent glacier outburst in Uttarakhand. Hajis has to come to Chennai. They have to stay there for 4 to 5 days to get the relevant documents from the Tamil Nadu State Hajj Committee, and they will deposit their goods and all luggage, and they will get all the documents, and they have to stay for 4 or 5 days in Chennai, and then from there they have to go to Cochin. It is very, very practically difficult. गुजरात का जो भी समुद्र तट है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, और गुजरात के मछुआरों को उनकी फिशिंग बोट्स के साथ पाकिस्तान मरीन बार बार उठा के ले जाती है. हाल में ही अभी की बात करें तो 1100 फिशिंग बोट और 400 मछुआरे पाकिस्तान की कराची जेल में कैद है. मैं अनुरोध आपके ज़रिए सरकार को करना चाहता हूं कि इनको जल्द से जल्द वापस लाने की और बोट्स को भी वापस लाने की सरकार उसके लिए कदम उठाए. महोदय, हाल के वर्षों में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने, बादल फटने और भारी भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है. उत्तराखंड भूकंप संभावित क्षेत्र भी है. महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विशेषकर पृथ्वी विज्ञान विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपदा की इन परिस्थितियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाए ताकि हिमालय और ग्लेशियरों के और नदियों के स्वभाव पर अध्ययन किया जा सके. Well, moving on, the Joint Committee of Parliament examining Personal Data Protection Bill has been given time till the first week of the second part of the ongoing budget session to submit its report. And the panel has 20 members from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. The bill seeks to provide for protection of personal data of individuals and establishes a data protection authority. The upper house on Wednesday condoled the demise of former member Mahendra Bahadur Singh. The extension of time granted to the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill 2019 by the House on the 23rd September 2020 for presentation of the report up to the second week of the winter session of the Parliament 2020 may be treated as extension up to the last day of the first week of the second part of the budget session 2021 of Parliament. And finally, the upper house on Wednesday condoled the demise of former member Mahendra Bahadur Singh. He had represented the state of Madhya Pradesh in the upper house from 1972 to 1978. Chairman remembered his contribution. Well, that's it in this edition of Rajya Sabha News. Stay tuned to Rajya Sabha TV. Thank you and goodbye.